ಆಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 524 ಭಾರತೀಯ ಪ್ರದರ್ಶಕರು ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 78 ವಿದೇಶಿ ಪ್ರದರ್ಶಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಣ್ಯ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಜಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿನ್ನೆ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಡಕೋಟಾ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಹಾರಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಗೂನಿ ಬರ್ಡ್ ಎಂದೇ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಡಕೋಟಾ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ನಮ್ಮ ವಾಯುಪಡೆಯ ಮೊದಲ ಪ್ರಮುಖ ಸಾರಿಗೆ ವಿಮಾನವಾಗಿತ್ತು. ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಗೂನಿ ಬರ್ಡ್ ವಿಮಾನಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಆದ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಈ ವಿಮಾನವು 1947ರಿಂದ 1971ರವರೆಗೆ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. 1947ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಸಾಗಿಸುವುದನ್ನು ಹಿಡಿದು 1971ರ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಈ ವಿಮಾನವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗಿತ್ತು. The Douglas DC-3 and its military variant C-47 selected by the Indian Air Force is powered by 2 Pratt & Whitney piston engines and could carry 28 fully armed troops. It has a top speed of 190 miles per hour and a range in excess of 1,000 miles. More important, the aircraft had a very low accident rate and was considered the best transport plane of the Indian Air Force. भारतीय संस्कृति के अनुरूप भारतीय वायुसेना अपनी परंपराओं और विरासत को सदैव सर्वोपरि सम्मान देती है तथा वरिष्ठों के अनुभवों को आत्मसात कर हमेशा सचेत रहती है. आसमान की रक्षा में परशुराम तुम्हें मन में रखते हैं, घुसकर दुश्मन के घर में विजयी परचम फहरा सकते हैं. इतिहास नहीं, भूगोल भी बदल सकते हैं. Today for the flying display, the aircraft is being piloted by a veteran Group Captain Ajay Menon along with Wing Commander Siddharth Gehlot from the Heritage Flight of Indian Air Force. Namaskara, Bangalore. This is Group Captain Menon and Wing Commander A.K. Singh calling from the Dakota cockpit. I hope you're enjoying the aerial display. I have only one question, Bangalore. How's the Josh? Bangalore, remember to keep your mask on, keep social distance, and beat the pandemic. Dakota out. Ladies and gentlemen, the voice you heard was directly by the pilot from the cockpit of the Dakota in front of you. Ladies and gentlemen, the aircraft performing a beautiful ballet in the sky in front of you is none other than the first Dakota that landed at Srinagar. We present to you Dakota with tail number VB905, christened as Parshuram, to signify the eternal warrior, the 6th avatar of Lord Vishnu. वायुसेना के सबसे बड़े नायक को वायुसेना में वापसी का श्रेय राज्यसभा सांसद श्री राजीव चंद्रशेखर को जाता है. श्री राजीव चंद्रशेखर के पिता वेटरन एयर कमोडोर M.K. चंद्रशेखर VM VSM डकोटा के पायलट थे तथा उन्हीं की ओर से यह फ्लाइंग डकोटा वायुसेना को 13 फरवरी 2018 को उपहार स्वरूप प्राप्त हुआ. उस दौरान यह विमान कश्मीर तथा उत्तर पूर्वी राज्यों में सैनिक परिवहन में प्रयोग होता था. आज विमान की कमान संभाले हुए हैं वेटरन ग्रुप कैप्टन अजय मेनन तथा विंग कमांडर
सिद्धार्थ गहलोत। As she goes past you for the final time, look how majestically she will turn and land right in front of you. आपके सामने लैंड होता हुआ भारतीय वायुसेना का परशुराम अब कुछ ही क्षणों में आपके सामने 80 वर्ष पूर्व भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल डकोटा पहला बड़ा परिवहन विमान था जिसे एक बार फिर विंटेज कलेक्शन में सम्मान मिला है। देखिए पाकिस्तान को 2 युद्धों में परास्त करने वाला डकोटा आखिर कैसे बना परशुराम। 1947 की जंग में बहुत ही कम समय में सैनिकों को सीमा पर तैनाती में सहायक बनकर परशुराम बना कश्मीर का तारणहार। हिंद के हवाई दस्ते को ढाका मोर्चे में ले जाकर इसी ने एक नई जयगाथा को जन्म दिया था। I'm ready.